Good evening, everyone. So, I would like to present a topic on additions and deletions in income cannot be made merely on the basis of assumptions and presumptions, which is an order of ITAT regarding the case law. ITAT Jaipur Bench P, Deputy Commissioner of Income Tax versus Curosis Healthcare Private Limited. So, in this case law, following sections are mentioned. So, I'm giving a brief summary about those sections. First section is section 148. In this section, notice for assessment under section 147 is served. Assessing officer has to serve notice to assessee requiring him to furnish return of income within specified time in notice. And what is section 147? Section 147 is income escaping assessment. If any in any income chargeable to tax has escaped assessment for any assessment year, assessing officer may assess or reassess such income or recompute loss or allowances or deduction for such assessment year. Further, AO may also assess any other income that come to his notice subsequently during course of proceedings under this section. Next section is section 142. Notice under section 141 is served if assessee doesn't file RO return of income within time under section 139(1). Assessing officer may issue notice requiring him to furnish return of income. And if assessee doesn't comply with this, so best judgment assessment shall be done by AO regarding this. Uh, next, for 141 notice under section 141, 142, 142(1) is also served for making assessment, assessment for books and information. If assessing officer can issue notice to produce books and documents, and also he can ask for information including details of assets and liabilities. Books and documents can be asked for maximum 3 years prior to relevant previous year. And if assessee doesn't comply with this, assessing officer can initiate search under section 132. Next section is section 37. In this section, if any expenditure is allowed as deduction, only following conditions are satisfied. First condition is revenue in nature. Revenue expenses must be revenue nature, and it should be incurred wholly and exclusively for business and profession. Offense under any other act is not to be allowed as deduction. Next section is this circular must be kept in mind because the case law I am going to mention is all based on this section. This circular, sorry. Section 69C. In case assessee fails to explain the source of expenditure or part thereof to the satisfaction of assessing officer, such expenditure shall be considered as unexplained expenditure and to be deemed as income of the assessee. And the tax rate shall be 60%, which is to be increased by 25% surcharge, 6% penalty, and the final tax rate which is to be assessed is 83.25% including cesses. And now let's discuss about the case law. The facts of the case law are the assessee company was engaged in the business of pharmaceutical goods and sells the same through the dealer distribution network and the stock is at the ground level. During the year, the assessee claimed sales and business promotion expenditure by way of giving freebies to computers and other gift expenses to dealers and stockists with reference to their performance in achieving target of sales. He also gave computer gifts and other gifts to them. The assessing officer noticed that in most of the cases, the assessee could not produce bills or vouchers of the sales promotion expenses, which is debited in profit and loss account. He further observed that the assessee gifted the items and incentive, then TDS should be deducted under section 194H. He further observed that the assessee gifted the chain, kada, gold and silver jewelry to various doctors or toads for soliciting admission in nursing home or hospitals, which is prohibited by the circular of CBDT. And also as per the provision of section 37. And consequently, he also made addition on account of the amount of computer gift and other gifts, which are and these expenses claimed by the assessee towards sales promotion or business promotion and debited to profit and loss account.
On appeal, the commissioner deleted the additions made by the assessing officer on the premise that CBDT circular was not at all attractive since no any gifts or freebies were given to any doctor, medical practitioners, and the assessing officer no, were given to any doctor, medical practitioners, and the medical practitioners, and the assessing officer had uh, disallowed the expenditure merely on the basis of assumptions and presumptions and guesswork. Also, it is further appealed to income tax appellate tribunal by assessing officer. And on the revenues appeal to the tribunal, it was held by ITAT that regarding sales promotion and business promotion expenses. While making the disallowance being the total of various sales promotion and business promotion expenses, the assessing officer relied upon the CBDT circular number 5 2012 dated 1/8/2012 and taken a view that as the expenditure is within the coverage of that circular and thus the claim of the assessee not considered as business expenditure under section 37(1). And upon careful consideration of the above circular and the finding of the commissioner appeal, by allowing the claim of the assessee, the commissioner has had not made an error in law and in facts while considering the claim of the assessee. The report of the assessing officer also, while commenting on expenditure, has accepted that the fact that the assessee has submitted the name of the party to whom the gold coins were given. The assessing officer has given his comments on each expenditure, but nowhere in the assessment order in the report that the benefit directly or indirectly given as freebies to medical practitioners and their professional associations, which is in violation of the regulation issued by Medical Council of India. Once the basis on which the additions made is not substantiated by the assessing officer by any evidence contrary to the claim, which is supported by bills and vouchers, and also it is given to a manufacturing company where their books are subjected to audit. The commissioner appeals, after evaluating the submission of the assessee, considered the various aspects of the claim of the assessee and has given a reason finding that why the claim of the assessee is allowable. The assessing officer has not opposed finding of the commissioner by filing contrary submission or evidence. Thus, the detailed finding of the commissioner while allowing the claim of the assessee is not faulted, whereas the revenue has not established that there is a violation of board circular as relied upon by the assessing officer. So merely on presumption and assumption, circular will not be made applicable to the fact of the case when nothing contrary is placed on record. So in light of these findings, the revenue fails and thus the same is dismissed. Next one is regarding computer gifts and other gifts. As regard to this issue, the assessing officer has made the additions under section 69C. The reasoning given by the assessing officer while making the disallowance was that the assessee could not produce any ledger accounts, bills, vouchers, or purchase gifts, and could not say that to whom the computer gifted. Considering the facts, the primary condition to make the addition is not fulfilled. The assessee has incurred the expenditure and has offered the explanation about the source of such expenditure. The reasoning given by the assessing officer is against the provision of law. As the assessing officer has not doubted the source of the expenditure, the applicability of section 69 is not in accordance with the law. The commissioner appeal, after considering the board circular and provision of law, taken a considered view that assessing officer has not placed any material on record to hold that the expenditure was not incurred and the source of the said expenditure is not explained by the assessee. The payment for this expenditure has been made by Crow's account pay check, and this fact is not disputed by the revenue. Thus, merely based on assumption and presumption, no addition can be made. Even based on these facts, Commissioner also considered the claim of the assessee accordingly. Thus, there is no fault seen in the detailed finding of the Commissioner while allowing the claim of the assessee for amount incurred towards computer gift and other gift expenses. So based on those observations, the ground raised by the revenue fails and the case is dismissed. What happened regarding the TDS law, 184H?
194H is not applicable to any incentive given to retailers or distributors. It does not form part of commission. Yes. 94 It is not 194 applicable on commission on brokerage, but the amount was given as an incentive to distributors. So incentive is not commission or brokerage. Yes, it is. It is in addition to the basic amount fixed. Yes, any comments upon this case? बट सर इस केस में मुझे कंफ्यूजन है वो ये है कि असेसी में काफी सारे एक्सपेंडिचर किए लाइक होटल का खर्चा किया इसमें कुछ 1,27 lakhs का गोल्ड परचेज किया हुआ था उसके अलावा कुछ स्टाफ को यूनिफॉर्म वगैरह कुछ फैब्रिक्स थे जो उन्होंने सेल आउट किए हुए थे उसके अलावा कुछ कंप्यूटर रेट्स थे ये सारे एक्सपेंडिचर थे जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने की बारी आई तो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस में जो उन्होंने प्रोड्यूस किए वो सिर्फ गोल्ड ज्वेलरी के बिल प्रोड्यूस किए थे और उसमें भी असेसिंग ऑफिसर ने तो ये कह के डिसअलाउ किया था कि गोल्ड कॉइन कहा गया था मुझे लेकिन जब मैंने ज्वेलरी के बिल देखे तो वो ज्वेलरी के थे तो इस बेसिस पे उसने उसको डिसअलाउ कर दिया कि मेरे को एक्सप्लेनेशन सही नहीं दी और बाकी केसेस में बाकी जो सारे केसेस थे उसमें उन्होंने ये बोला कि मेरे को बिल्स कोई लेजर कोई वाउचर प्रोवाइड नहीं हुआ और ये जो गिफ्ट्स हैं कहते हैं जो एक्सपेंसेस किए हैं ये मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए किए होंगे तो सर्कुलर का रेफरेंस देते हुए उसने ऑफेंस में ट्रीट करके इसको डिसअलाउ कर दिया सारा लेकिन जब ये केस सीआईटी अपील्स के पास गया तो उन्होंने सीआईटी अपील्स में ये सारी डिमांड्स ट्रीट कर दी तो अब जो 1,27 lakhs का जो एक्सपेंडिचर था उसके लिए तो ये था कि असेसिंग ऑफिसर ने बिल्स भी दिए थे और पार्टी के नाम भी दिए थे लेकिन पार्टी के नाम के बाद उसने ना कोई पैन नंबर दिया था उनका ना कोई एड्रेस दिया था तो हाउ मतलब मेरे को ये क्वेश्चन है कि असेसिंग ऑफिसर की कैसे बता पाता कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं थे जिनको 1,27 lakhs का एक्सपेंडिचर दिया तो सीआईटी अपील ने इस चीज के लिए मतलब वो एक्सपेंडिचर कैसे अलाउ किया और दूसरा ये था कि जो असेसिंग ऑफिसर का जो पूरा असेसमेंट ऑर्डर है उसमें हर चीज में ये लिखा हुआ था इन्होंने बिल्स नहीं प्रोवाइड किए तो एक्सपेंडिचर मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए हुआ होगा इस वजह से वो डिसअलाउ कर रहा है सिर्फ एक इसी लाइन को शायद बेस मान के सीआईटी अपील में सारे जो एक्सपेंडिचर थे जिनके मतलब एक्सपेंडिचर के जिनके बिल्स और वाउचर भी नहीं थे वो सारी उनको भी अलाउ कर दिया जस्ट बिकॉज कि एओ का असेसमेंट ऑर्डर ठीक नहीं था कि उसने ये assumption लिए है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के ऊपर खर्चा हुआ है और ये मतलब उनकी उसके assumption को मान नहीं सकते इसलिए सीआईटी अपील ने सारी डिमांड डिलीट कर दी तो अगर वो बिल्स भी प्रोवाइड नहीं कर पाया वो ये नहीं बता पाया कि कॉन्फ्रेंस किस वजह से हुई थी या रुपये का स्टे किसने किया या फिर अगर जो गोल्ड के जो उसने बिल जो गोल्ड गिफ्ट भी किए वो किन डीलर्स को किए अगर वो डीलर्स के थ्रू डील कर रहा है मतलब डीलर्स को ही वो दे रहा है मेडिकल प्रैक्टिशनर को नहीं दे रहा तो वो डीलर्स कैसे जस्टिफाई हुए कि वो डीलर्स नहीं मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो सीआईटी अपील ने किस बेसिस पे ये सारी इतनी बड़ी डिमांड है उन्होंने लिया भी या नहीं लिया ये सारी चीजें ये पूरे फैक्ट्स का मतलब जितना मैं रीड किया मैंने इस पूरी केस लॉ को उसमें कहीं पे भी इस बारे में वो नहीं है इट्स जस्ट दैट कि वो पूरा असेसमेंट ऑर्डर एक्सप्लेन किया हुआ है जो एओ ने दिया और उसमें सिर्फ एक ही लाइन बार-बार है कि मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए खर्च किया होगा मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए खर्च किया होगा तो शायद इसी लाइन को बेस मान के सीआईटी अपील ने वो 1,51 लाख की डिमांड है वो डिलीट कर आई डोंट नो हाउ मतलब ये मेरे को बहुत अजीब लगा उसने 69C का बेनिफिट एक तो वो दे दिया 69C says it is unexplained expenditure तो एक्सपेंडिचर अनएक्सप्लेन्ड का है हां वो 69C अट्रैक्ट नहीं होता सो 69C अट्रैक्ट नहीं होता बट द बिल्स नहीं है उसका यूटिलाइजेशन नहीं है एक्सपेंसेस बिजनेस के लिए है कि नहीं है वो चीजें इन्होंने वो कर दी और सिर्फ असिस्टिंग ऑफिसर ने जो असेसमेंट ऑर्डर में जो ये मेडिकल प्रैक्टिशनर और जो 69C की जो बात की है जो ऑब्वियसली गलत थी असेसमेंट ऑर्डर में भी तो वो चीज को बेस मान के उन्होंने सारी डिमांड डिलीट कर दी पर लेकिन वो 1,51 लाख एक्चुअली में कहां खर्च हुआ किस वजह से हुआ मेडिकल प्रैक्टिशनर को गया या नहीं दिख गया मतलब जिस बेसिस पे डिमांड आई थी उसके बारे में इस केस लॉ में कहीं भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि सीआईटी अपील ने भी कहीं कोई मतलब फर्दर इंक्वायरी की हो कुछ नहीं है मुझे लगा सीआईटी अपील को पैसे दिए गए हैं Not only CIT, the ITAT also. हाँ जो भी है सीआईटी ने इसको सीआईटी अपील के ऑर्डर को अफर्म किया But logically, अगर आपका सेक्शन ही गलत है, the whole edition should not be 50. अगर आप सेक्शन गलत कर रहे हो, आपका presumption गलत है, then there are a lot of case law that on
addition can be made. So अगर वैसे legally देखें तो these two stands can be always taken कि first the section is wrong. You know, once you are making an addition in one section and that section itself is wrong, how can the addition be sustained? CITM भी further एक करोड़ की डिमांड को एडिशन करने के लिए वो वो अपना further दिमाग नहीं लगाएंगे। वो चीज़ ये हो सकता है कि CITM उनको fact check करनी चाहिए कि वो दूसरे section में enhance कर सकता था। Secondly, ITAT को demand back करना चाहिए so that you can see the fact and then get it. That is different, बाकी sir. In India, a lot of things happen. Then हमारे sector का भी presumption of fiancé है. यहाँ food का issue कम नजर आ रहा है. यहाँ the Indian style of objection जो वो ज्यादा नजर आ रहा है. वो जो Indian style से चीजें काम हो जाते हैं, Indian style से काम हो जाता है. Under the table. In Jaipur bench. Yes. Member name. Dr. S. Sita Lakshmi, judicial member, and Rathore Kamlesh Janti Bhai, accountant member. So anyway, the judgment is there, but then yes, here again I don't think this judgment can be relied for any because it's totally based on facts. Then what you must know is 37(1) में जो है expenses should not be capital in nature, it should be paid only exclusively for the growth of the business and not Should be not not be an profit. offense. So वो offense है, मतलब payment to doctors by pharmaceutical companies is an offense, which I think pharmaceutical companies and doctors they do day in and day out. मतलब उनका business pharmaceutical का business चलता ही नहीं उसके बगैर और because regular business है इन लोगों का. So this offense is done. Expenses को आप सुधार इस form में allow कर दिया ये तो इस पे तो I think there's no point in discussing or debating this time. This is individually. Good points are different from motions. अगर हम कोई event कर रहे हैं और उसमें हम competitions रखते हैं कुछ रखते हैं and we give good points as a result of the or as a result of total, vote it will not be allowed. Would be allowed if it is like that. Otherwise, ये भी dealers को दे रहे हैं अपने gold points या gold jewelry. हाँ लेकिन वही justified नहीं है just- पैसा हाँ, बढ़ाने that के is लिए different, but but otherwise otherwise अगर तो hotel ऐसे को कैसे allow है No, if you are giving it to dealers, then it becomes a part of the sales promotion because gold coin देने में कोई prohibition नहीं है, but gold coin being given to doctors is prohibited. Second thing is that gold coin आपने purchase के bills भी नहीं है computer के आपके पास, so whether you have incurred the expense at all or not, even that is not verified. Second thing is that where those assets have been utilized, that is not becoming clear कि किसको दिया आपने, so that verification has not been done. So keeping in view all these things, I think this is an incomplete judgment or speaks upon the judiciary, the kind of judiciary which we have in our country. So unfortunate, but then that is something which we are living with. Yes. Shall we reverse this one? Yes. Thank you. Yes, anything else to be discussed? बोर्ड मीटिंग की डेट्स को देने का टाइम नहीं बचा, ऑलरेडी 9th अगस्त हो गई है. बोर्ड मीटिंग्स हैव टू बी हेल्ड बिफोर 31st अगस्त. आपको पता है वैसे कि बोर्ड मीटिंग 31st अगस्त से पहले होनी है. तो अब तो बोर्ड मीटिंग की डेट मत दो, बोर्ड मीटिंग्स करनी शुरू करो कि भैया कौन सी डेट को कौन सी मीटिंग कर रहे हैं. एंड देन वी हैव द मीटिंग्स, एक्चुअल में मीटिंग कराओ ताकि वी हैव द मीटिंग विद द एसएससी आल्सो, राइट. सो बोर्ड मीटिंग्स फिक्स कराओ जल्दी से. डेट्स देनी है कि बोर्ड मीटिंग करनी है, क्या करना है मतलब डेट्स दे दो, मतलब डेट को अल्टीमेटली डेट कुछ तो फिक्स करेंगे हम डेट्स. तो प्लीज फिक्स योर बोर्ड मीटिंग की डेट्स नाउ. वी रीच द एंड. आपने तो फिक्स करी थी मेरे से डिस्ट्रोनी है, दूसरा किसकी थी क्या हुआ
स्टोरी की तो ऐसे उनसे मीटिंग हुई थी लेकिन बाकी स्टेक होल्डर बाकी now the point is that now the board meeting में आपको adopt करनी है, financials adopt करने हैं, तो ये आपको financials आपको remove करने हैं, आपको adopt करने हैं, remove करने हैं, board directors की report लेनी है, तो ये आपको fix करो, आज ये काम करें, हमें administration ने अपना 5 बजे, अभी आप पूजा को आज लेके जाना अपनी board meeting से, tax audit वाले जो हम जो है सितंबर में देख लेंगे, but जो private companies हैं, उनको तो we need to close before 31st August. I don't want you to sign any balance sheet other than in the board meeting on that particular day itself. और उसको फ्लेक्सी मत देके चलो कि हाँ ठीक है जी हफ्ते बाद भी कर लेंगे वो डेट जनरेट हो जाएगा ये हो जाएगा डोंट गेट इट ऑल दोस थिंग्स फिक्स द डेट ऑल द डायरेक्टर्स उसी टाइम डायरेक्टर साइन कराओ उसी टाइम साइन करो और फ्रीज ऑल दोस थिंग्स दैट सेम डेट इज द balance sheet. Next week the topic will have Sorry. एकेडमिक कॉलेज कंटेंट की बहुत बड़ी लिस्ट है सो आई थिंक जो एक बार यहाँ पर माइक पे आ जाता है उसको मजा आ जाता है क्योंकि he or she wants to come again and again जो नहीं आता वो वहीं बैठा रहता है so now the choice is yours you want to be on this side of the mic or that side of the mic so that is why you will find जो जो एक बार आया था you want he or she wants to come a second time third time fourth time और जो नहीं आया वो वहीं बैठे रहते हैं so please take initiative छोटे छोटे टॉपिक्स हैं all of them may not be जो है बहुत complicated नहीं होंगे कुछ में बहुत छोटा छोटा इशू होगा so I think अभी आज हमने कौन सा आइडेंटिफाई किया था जिसका एक नहीं था आपका था so वो आप मेरा टू को ये वाला सुपर के नहीं था बाकी तो आपका वाला जो फैक्ट्स पर केस था और आपके तो थे वो यूनिटी जो ज्वाइंट टेनिस को बड़ी तरह 40 के उसका ब्लॉक आउट से उसमें ये कि वो इशू मीनट वाले और वो काफी ओल्ड जजमेंट्स हैं ये आर्टिकल लिखा होगा किसी ने आर्टिकल है वो जजमेंट्स काफी पुरानी है सो दिस इज क्वाइट वेल सर्कुलेटेड है मतलब ये वाला जो केसेस हैं इसमें से बाय एंड लार्ज सर्कुलेटेड है वो मैरिड डॉटर वाला शायद नहीं होगा या और आपको वन ओनली जजमेंट वाली होगी बाय एंड लार्ज दीस केसेस आर ऑलरेडी मैटर्स आर ऑलरेडी देयर और दूसरा मुद्दा आपका बहुत फैक्ट्स को ये वो दो तीनों ये डिलीट कर दे उनका वाला एक ओके थैंक यू सर सोने का ऐसे मत करो। मुझे जगह